As Malti turns the pages of a newspaper while at work, her eyes stop on one particular story. She asks her colleague Suresh if he had read the news. When Suresh inquires about the story, Malti tells him about the news about the IT department tracking spendings. Reading this, Malti gets worried as she had bought an expensive watch last month and wonders how the income tax department knows what one is buying and where investments are made. She asks Suresh and wonders who gives all these details to the income tax department. Malti's concerns are justified because she has bought an expensive watch. Her question is also pertinent that who gives all these details to the income tax department? In fact, the income tax department now works on the logic that a person can hide his earnings but cannot hide his expenses or investments. In the last few years, the income tax department has made a mechanism by which the expenses and investments are monitored. The question is, which of our transactions is monitored by the income tax department? The answer is high value transactions, that is, on big expenses and investments. The name of the system is Statement of Financial Transactions, that is SFT. Under this, various types of limits have been fixed for transactions. In case of transactions exceeding this limit, the concerned unit informs the income tax department about it. Now let's come to when and to whom the income tax department has to give information about financial transactions. Number 1. The first transaction is related to the savings account. In the entire financial year, the bank informs the income tax department about the deposit or withdrawal of 10 lakh rupees or more in the cash savings account on whether this transaction is from one account or more than that from the account. Apart from this, information is also given to make a demand draft, DD, pay order or banker's check of 10 lakh rupees or more through cash. Number 2. Information is given to the income tax department on depositing or withdrawing cash of 50 lakh rupees or more in the current account. The information of FD of 10 lakh rupees or more in a financial year is also given to the tax department. This is applicable in both cash and digital cases. The fourth transaction is related to the credit card. If the credit card bill of 1 lakh or more is paid in cash or the bill of 10 lakh rupees or above is paid in any other way, the information is given to the department. The fifth transaction is related to real estate. If you buy or sell a property worth 30 lakh rupees or more, then it is the job of the property registrar to give information about it. On buying a property worth more than 50 lakh rupees, 1% TDS deducted at source is deducted by the buyer. Based on the TDS, the transaction information reaches the department. Number 6. If a person buys shares, debentures, bonds or mutual funds worth 10 lakh rupees or more in a financial year, then it is the responsibility of that company or institution to inform the income tax department. The seventh transaction and the last one is related to the common man. Crores of people like Malti come under its ambit. In case of payment of more than 2 lakh rupees in cash for the purchase of any goods or services, the concerned seller should inform about this to the income tax department. For example, if you buy jewelry and pay more than 2 lakh rupees in cash, then it is the responsibility of the shopkeeper to inform it to the department. Also, for all transactions above 2 lakh rupees, you also have to provide PAN card. रजिस्ट्रार ऑफ प्रॉपर्टीज जो है, जो सब रजिस्ट्रार होता है, कहीं पर इंस्पेक्टर बोलते हैं उसको, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ स्टैंप्स बोलते हैं, स्टैंप अथॉरिटी जो है, रजिस्टरिंग अथॉरिटी जो है, वो आयकर विभाग को सूचना देती है. कोई भी प्रॉपर्टी जो 10 लाख से ऊपर की है, रजिस्ट्री हो रही है जिसकी, या उसकी स्टैंप वैल्यूएशन जो सेक्शन 50C इनकम टैक्स के अंदर प्रिस्क्राइब्ड है, अगर वो उसकी वैल्यूएशन 30 लाख कर देती है तो उसकी सूचना उस सब रजिस्ट्रार को आयकर विभाग को देनी होती है. फॉर्म 61A के माध्यम से वो भरी जाती है. उसका एक ऐसा रूल 114 BBE के अंदर प्रोविजन दिया हुआ है. अब दूसरा जो मेथड है जहां से कैपिटल एसेट हुआ, ये तो है प्रॉपर्टी के बारे में बात. दूसरी है शेयर्स और म्यूचुअल फंड. शेयर्स और म्यूचुअल फंड भी कैपिटल एसेट माने गए हैं, उन पर भी कैपिटल गेन लगता है. जब उन पर कैपिटल गेन लगता है तो उनकी जो सूचना है वो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू जाती है. जितने भी हमारे
ब्रोकर्स हैं, जो अथॉरिटीज हैं जिनके साथ हम शेयर्स के बारे में डीलिंग करते हैं, वो इसकी सूचना आयकर विभाग को देते हैं। Information about financial transactions also reaches the income tax department through PAN, mobile number, and Aadhaar, as they are used in almost every major transaction. PAN is required for opening a bank account or demat account, applying for a credit card. If your bank deposit, insurance premium, mutual fund or bond purchase, restaurant, hotel or foreign trip bill is more than 50,000 rupees, then too you have to give PAN. If the rent received from property is more than 10,000 rupees, then the PAN has to be given. सबसे जरूरी तो यह है कि कैश का ट्रांजैक्शन बिल्कुल मत कीजिए। 2 लाख रुपए से ऊपर अगर आप कैश निकालते हैं अपने सेविंग बैंक अकाउंट से, या 10 लाख रुपए से ज्यादा आप करंट अकाउंट से निकालते हैं, तो ये इसकी सूचना बैंकिंग अथॉरिटीज को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देनी होती है। दूसरा, आप जब भी कुछ खरीदें या बेचें, उसकी आयकर को सूचना दें। जो भी मैकेनिज्म अवेलेबल है, जितनी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस आप करते हैं, प्रॉपर ड्यू डिलीजेंस से करें, और जो पेमेंट्स हैं या लेना या देना, वो प्रॉपर बैंकिंग चैनल्स के थ्रू करें। उसको कोई किसी तरह का टैक्स अवॉइडेंस की कोशिश ना करें। अनडिस्क्लोज्ड इनकम जो है, उसके अंदर अपनी एक्टिविटीज को इन्वॉल्व मत कीजिए। अपना बिल्कुल सीधी जिंदगी जीजिए, सरकार को ईमानदारी से अपना टैक्स दीजिए। जो अपनी आयकर की रिटर्न है, उसको आप समय पर भरें। इस साल की रिटर्न भी ड्यू हो चुकी है, शुरू हो गई है रिटर्न फाइल होनी, वो समय से अपनी रिटर्न भरें। अगर आप आयकर विभाग आयकर के सेक्शन 139 के अंदर आपकी रिक्वायरमेंट है इस रिटर्न को भरने की, तो आप भरिए। लेकिन मैं कहूंगा कि अगर आपकी बिलो टैक्सेबल भी है, तो भी मेरी पर्सनल सलाह ये होगी कि आप अपनी रिटर्न भरिए, क्योंकि ये रिटर्न की आपको बहुत जगह जरूरत पड़ती है। जब आप लोन लेने जाते हैं, किसी किस्म का वीजा लेने के लिए आप अप्लाई करते हैं, कुछ भी आपको करना हो, तो आयकर की रिटर्न एक बहुत बड़ा माध्यम है। आप अपनी आय को जिससे डिस्क्लोज कर सकते हैं। TDS is also a way to keep an eye on the income of taxpayers. TDS is deducted on the amount deposited in the bank or post office on receiving interest of more than 40,000 rupees in a year. Similarly, TDS is deducted in other cases, including buying a property. This also lets the income tax department know about your earnings. टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, TCS है बहुत जगहों पर। सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, बहुत डिटेल में हम उसके बारे में बात कर चुके हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, अगर आप कोई कंपनी शेयर्स अलॉट करती है तो वहां फाइल करना होता है, तो वहां जितनी तरह की इंफॉर्मेशन MCA में फाइल होती हैं, वो सब भी आयकर विभाग उसको ट्रैक करता है। देन सबसे जरूरी GST से पूरी इंफॉर्मेशन जो है आयकर के पास जाती है, पूरी इंफॉर्मेशन से। रजिस्ट्रार ऑफ प्रॉपर्टीज हम बात कर चुके हैं उसके बारे में। रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस और उनके नीचे जितनी भी एजेंसीज हैं, वो सब इंफॉर्मेशन देती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो आज 2018 के बाद से जो इंपॉर्टेंट जो डिपार्टमेंट बन गया, वो है GST। आप जो भी लेन देन करते हैं, जब आप उस पर GST क्लेम करते हैं या GST जमा कराते हैं, तो आपकी सारी इंफॉर्मेशन आयकर विभाग के पास जाती है। और एक और मैकेनिज्म है सरकार के पास साहब, वो है विसल ब्लोअर्स। लोग आपके बारे में, एक दूसरे के बारे में जो खबरें देते हैं, तो सरकार ने अपने विसल ब्लोअर्स भी छोड़े हुए हैं, जो सरकार को बताते हैं कि कौन सी बड़ी ट्रांजैक्शन होने जा रही है या हो गई है। तो वो भी एक मैकेनिज्म है। और एक सरकार का अपना डिपार्टमेंट है साहब, उसका नाम है इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन विंग। तो जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है, उसका काम है कि पूरा जो है सूचना तंत्र से इंफॉर्मेशंस को जुटाना, फिर उस पर अपना काम करना, फिर उसको एनालाइज करके आयकर विभाग को देना। और देन एक इन्वेस्टिगेशन विंग है जो सर्च करता है या सर्वे करता है। तो सर्च एंड सर्वे से भी इंफॉर्मेशन निकलती है एक दूसरे के बारे में। So this means whether you want it or not, the income tax department is aware of your every big transaction. But there is no need to panic as long as you can justify your spending and investment with earnings. If there is a difference between your income and expenses, then notice can be given by the income tax department. You will find the details of all the expenses and investments made in the financial year in your annual information statement, which can be downloaded from the website of the income tax department. So you must check AIS before filing income tax returns so that there is no difference between income and expenditure or investment.